Day 2 of the Delhi Chalo protest, and farmers have resumed their stir after a late night ceasefire yesterday. In fact, it is already raining tear gas shells at Shambhu Border as we speak, which falls between Punjab and Haryana. Now, early morning chaos was witnessed at the Shambhu Border as police resorted to firing tear gas shells in an attempt to disperse farmers once again. Now, the farmer leaders are demanding a statement from the Prime Minister on their issue. Yesterday as well, cops tried to stall the march from entering the capital city with tear gas shells, which were fired using drones. Now, protesting farmers also clashed with the police on the borders. The centre has now strengthened national capital borders with more barbed wires, concrete slabs and barricades, keeping in view that farmers may try to enter Delhi with more force after yesterday's attempt. हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आएं और किसानों से वार्ता करें और जो पिछले 75 सालों से ये बड़ी मांग रही है हमारी, उनको मानना चाहिए। और दूसरा, 2 साल पहले आंदोलन हुआ, आपने ये सब मांगे तो पहले मानी हुई, कमिटमेंट कर ली हमारे साथ, तो अब उनको लागू करना का समय है, तो फिर आप समय मांग रहे हैं तो अनुचित है। प्रयोग हटाए, आम जैसे माहौल को पैदा करे। हरियाणा पूरी तरह 161 कंपनियां लगी हुई हैं पूरे हरियाणा में, जैसे अब हमने पढ़ा जो राजस्थान है उनके 3 जिलों में भी इंटरनेट को सेवाएं बंद कर दी गई। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी जमहूरियत कंट्री में। हम इस देश के किसान मजदूर हैं, हमें अपनी बात रखने दीजिए। हम आगे आपने हमारी बात माननी ना माननी एक अलग बात है। All right, we just essentially heard what Sarwan Singh Pandey had to state. He says that they want the Prime Minister to come and speak, in fact, resolving this issue. Also talking about the ground situation, he says that they should remove the barricades and let them protest. I understand Isha, my colleague, is joining me live from Tikri border. Isha, very good morning to you. Of course, you've been continuously reporting from this particular area. As far as we speak about the on-ground situation, we do know what is transpiring and on the other border areas, what's happening currently at Tikri border, as well as the heavy security deployment that continues? Yes, Nivedana. In fact, the security deployment has remained heavy since the last 2 days. In fact, yesterday also we saw several police officers patrol this particular lane behind me several times of the day. Currently, we are standing at the stretch where the barricading has started taking place. This is where the Delhi police has started barricading. In fact, the police is also monitoring who gets to enter from here and who doesn't. In fact, a lot of police personnel is present here. They are monitoring demands that, viewers also would better help understand, because of course, MSP is one aspect of it. Are there other demands that we should know of as well? Right, absolutely. In fact, you've put a very important point into perspective. MSP has been a point of contention for the last 2 years. In fact, the last time when the farmer movement took place, the MSP was again a point of contention. The farmers continuously demanded that a minimum support price should be set, but it was not done. And right now, also, the farmers have continuously stated that they want an MSP. The farmers have been against the privatization of their farmings. They have been against that. They have been anti that. They do not want corporations to take over farming. In fact, they're also stating that the recommendations of the Swaminathan Commission should be applied, should be taken care of, and they should be valued in that regard. But other than that, the cases that were filed at farmers during the farmer protest that took place 2 years ago, they are demanding that they should be withdrawn. There are cases of sedition. There are cases of there are multiple cases that these farmers are facing for protesting. So right, the farmers Isha. are also demanding that those cases should be taken back. When it comes to Lakhimpur Kheri, that is also the same thing that is being mentioned. Isha, I'll have to interject you there, but appreciate you getting, not only the ground report, but also helping us better understand what the demands are. We'll keep coming back to you, but thank you very much for the moment. I understand we also have another colleague of mine, Gurpreet's report from the Shambhu border. Let's take a look at that.
Well, both sides, whether the farmer side or the central leadership, they are open for holding the talks. But what we can understand, the farmers say multiple talks did not given any result so far. So that's why the talks of the record that is also continuing between the farmers and the central leadership. But officially, there is no update on the talks which is happening here officially, whether it's in Chandigarh or at this border, Shambhu border, where the farmers are sitting at this point of time. But yes, of course, they are also trying to talk to the lot of farmer organizations so that they सभी के सभी यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाए, तो दे विल मार्च टूवर्ड नेशनल कैपिटल। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बैरिकेडिंग की जा रही है ये किसानों के द्वारा में यहाँ पे, और कुछ किसान बैरिकेड के पास जा रहे हैं तो वहां से टीयर गैस शेल लगातार चलाई जा रही है, क्योंकि टीयर गैस शेल बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि किसी को भी बैरिकेड के पास नहीं आने देंगे। मैं अपने कैमरामैन साथी के साथ उधर वाली साइड भी दिखाना चाहता हूँ अपने। लखविंदर सिंह वरियाम नंगल, सुबह कमेर कमेटी आगू, जो टाइम दिया हल निकाले जैसे पहले तो बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि लगातार पहले भी देखा कि किसानों ने बातचीत की है मिनिस्ट्री से। हाँ, बातचीत करने के लिए कदम नहीं, चलते मैदान लड़ाई के मैदान में अगर बातचीत का हमारे को संदेशा आएगा, लिखती में संदेशा आता है, तो हम अपने आदमी को वहां भी उसी टाइम में रोक के बातचीत करने के लिए तैयार है। अब उधर की तरफ से तो लगातार हमारे ऊपर बमबारी हो रही है। हमारे कम से कम 150 आदमी कल बहुत गंभीर जख्मी हुआ है। अभी सुबह भी देखा 8 बजे के करीब जैसे हम यहाँ पहुंचे, तब से वहां से जो गैस के गोले थे वो आ रहे थे। यहाँ किसान इंजर्ड भी देखा है। हाँ, बहुत सारे किसान कल भी इंजर्ड हैं, रात भी हुए हैं। अभी सुबह ही अभी अर्ली मॉर्निंग में जब लोग मुंह हाथ धो रहे थे तभी से भी चल रहे हैं। आप देख रहे हैं, सुनाई दे रहा है बहुत सारे आदमी। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है किसानों की तरफ से, दे आर रेडी टू टॉक। वो कह रहे हैं हम बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक बार फिर से तस्वीरें हम यहाँ से दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे लगातार जो किसान है भारी मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं। और मेरे साथी भी है जो मनोज, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि लगातार हम दोनों ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। उनका भी यहाँ पे लगातार देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं टाइम्स ऑफ नाबार्ड के लिए। तो क्या लग रहा है, क्योंकि कल लगातार जो गोले चलाए गए हैं, आज भी सुबह देखा 8 बजे के करीब चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गुरप्रीत, जो स्थिति है कल हमने देखा कि किस तरीके से जंग का मैदान पूरा बना हुआ था। हालात आज भी वैसे ही लग रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज आंदोलन कुछ संगठित लग रहा है हमें कि किसानों को ये कहा जा रहा है कि भाई बैरिकेड के पास ना जाएं और जब दिशा निर्देश दिए जाएं उसके बाद ही जाएंगे। तो क्या आज एक साथ और संगठित होकर ही आगे बढ़ेंगे? देखो जी, जो कल का माहौल सी ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। लेकिन अब रोक रहे हैं, तो आज किस तरह आगे बढ़ेंगे? हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा टीयर गैस, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। आज ये refuse to budge, bearing a brunt of all of this are the common citizens like you and me, as Delhi borders remain fortified. Now, a logjam is expected again today in Delhi NCR due to the protest. The Singhu, Tikri, Ghazipur as well as Shambhu borders are expected to witness traffic snarls. Now remember, this comes after the last round of discussions between the government and the protesting farmers ended without a resolution, like how my colleagues also just did point out. And the Delhi police has once again issued a traffic advisory. Now, NH44 beyond Singhu border has been closed for general traffic. Meanwhile, let's tell you 2 lanes of NH9 and 1 lane of journey accordingly and avoid these stretches, especially during peak hours. Meanwhile, let's also tell you that Punjab and Haryana conducted a hearing on farmers' movement. Now, the court called it the right of the farmers to peacefully protest. Further, the High Court said that the farmers should be given a place in Delhi to protest. All 4 defendants in the case, that is the Centre, Punjab, Haryana and Chandigarh, have been asked to file a reply by tomorrow.